Good morning, respected parents and dear students. Welcome to your computer class. I am Brajesh Kumar. Today, I am going to discuss rest part of chapter 3, that is advanced features of Microsoft Word 2013. Now, let's start. Adding a new row. To add a new row or new column in the table, we follow some steps. Step 1. Position the cursor in the row above or below which a new row is to be inserted. सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन से रो या कौन से कॉलम के above और below या फिर लेफ्ट या राइट में कोई एक नया रो या कॉलम ऐड करना है. स्टेप सेकेंड. क्लिक ऑन द लेआउट टैब. Step 3. Click the Insert Above or Insert Below in the row and column group. A new row gets inserted in the table. Similarly, we can insert column by using Layout tab, from where we choose Insert Left, Insert Right options to add new column in the table. As you can see, this is the table from where we can add a new row above or below the cricket row. Step 2, layout tab पे click करेंगे. Step 3, insert above and insert below options. Choose anyone to create a new row in the table. Similarly, we can insert new columns like this. You can see, select the column where you add a new column and click on layout tab. Go to row and table group and click on insert left or insert right options to add a new column in the table. Next point, come to the next page. Deleting row or column. According to options, you can delete any row or columns from your table if you don't want to this row and column. We follow some steps like place the cursors in the row or column to be deleted. सबसे पहले कर्सर को रखना है जिस रो और कॉलम को आपको डिलीट करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब. लेआउट टैब पे क्लिक करना है. स्टेप 3, क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शंस. इन द रो एंड कॉलम ग्रुप अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर. जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिलीट वाले ऑप्शंस पे एक लिस्ट ओपन होगा. उसमें पूछा जाएगा कि सिलेक्टेड रो को डिलीट करना है या फिर सिलेक्टेड कॉलम को डिलीट करना है या फिर इंटायर टेबल को डिलीट करना है या फिर सेल को डिलीट करना है. As you can see, step 1, select any column or row which you want to delete from the table, and step 2, click on layout tab. Step 3, click on delete options. A list will be open up. Step 4, select any one options to delete a row or column or cell or table like this. Okay, when you click any one options, according to selected options, the selected cells, row, column, tables will be deleted. Next topic, splitting cells. According to name, split. Split means to break down. A single cells break down into multiple cells is called splitting cells. According to word, split means to break a single cells into multiple cells. Okay, we follow some steps to split cells. Some steps are: step 1, position the cursors in the cell that you want to split. Step 2, click on the layout tab. Step 3, click on the split cells.
options in the merge option. Merge group, the split cells dialog box appears. Specify the number of row and columns you wish to split the selected cell into. कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि जो सेल आप सेलेक्ट करके स्प्लिट करने जा रहे हैं उसके कितने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट किए जाएंगे. देन आफ्टर फाइनली क्लिक ऑन ओके बटन टू स्प्लिट अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स. फिर आप ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा जैसा कि दिखाया गया है इस फिगर में. स्टेप 1, सेलेक्ट एनी वन सेल. Step 2, go to the layout tab. Step 3, split cell options. Click on split cell options. When you click on split cells options, a dialog box will appear like this. Split cells, where you have to set number of columns, number of row according to your need, and finally click on OK button to split a single cell into multiple cells. Next one topic is merging cells. Merging cells is the opposite of splitting cells. Just opposite है splitting cells का merging cell. Merging cells refer to the combination of two or more than two cells in a row or a column into a single cell. Merging means to merge multiple cells in a single cell. Combine multiple cells to create a single cell is called merging cells. We follow some steps to merge cells like this. Select the cells to be merged. सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं. स्टेप 2, क्लिक ऑन लेआउट टैब. लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा. स्टेप 3, क्लिक ऑन मर्ज सेल्स ऑप्शंस इन द मर्ज ग्रुप. मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल ऑप्शन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप मर्ज सेल ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा द cells merged into a single cell. In this chapter, the next point is resizing column width and row height. We can resize any cell column width and row height according to our need. आप किसी भी सेल के कॉलम विड्थ को और रो हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं according to your choice. There are two methods to reset column width and row height. First one is using the mouse pointer and second one option is using the layout tab. Both method is used to arrange column width and row height. To arrange column width and row height, as you can see, next one topic is formatting table. According to name, formatting means to design, to decorate something. Or here formatting table is options by which we can design, we can format table in the document to improve the appearance of the table, to improve the design of the table according to our need. Formatting text inside the table. We can format the text inside the table in the same way as you format the text in the document. जिस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वैसा ही हम टेबल के इनसाइड भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब के फॉन्ट ग्रुप सेक्शन का यूज़ करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन पॉइंट इज अप्लाइंग बॉर्डर्स. Border means boundary. By using border options, we add border around the table or around the selected cells or around entire table. We follow some steps to add border. As you can see, step 1, position the cursors in any cell of a table to apply border.
or select cells to put the border across them. Click on Design tab. Click on arrow under the border options. In the border group, a drop-down list appears. Click on Borders and Shading options. The Borders and Shading dialog box appear. Set all the options related to add border and finally click on OK to apply the setting chosen by you. To apply setting, step 1, select the table or select the cells. Step 2, click on the Design tab. Step 3, click on the arrow below the setting options. In the table style group, a list of colors options appears. Select and choose the color of your choice. The color appears as the background of the table or selected cells. As you can see, this is the table. First of all, select the table or select the cells. Step 2, click on Design tab. Step 3, click on Setting option. When we click on Setting options, a list of colors will be open up on the screen. Choose any one color to apply as a background color on the selected cells or on the selected table. Apply table style. Words provides many inbuilt table styles that lets you quickly change the borders, shadings, alignment and font in the tables. वर्ड एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे टेबल स्टाइल ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं जिसे चूज करके हम लोग अपने टेबल के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। टेबल के स्टाइल में आपको टेबल का बॉर्डर, टेबल शेडिंग, एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट सारी चीज़ सेट किए हुए होते हैं। बस हमें किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है टेबल स्टाइल ग्रुप में जाके और वो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन आपके टेबल स्टाइल्स अप्लाई हो जाते हैं और इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेबल और क्लिक एनीवेयर इनसाइड द टेबल। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना होता है या फिर टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करना होता है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक द मोर button in the table style group to see all the table styles. Step 4, click and select the desired table and the style will applied to the table. As you can see, this is the method. Step 1, select the table. Step 2, click on Design tab. Step 3, click on Table Styles options to select any one options from there to apply on your selected table. As you can see, this is the list where all the table styles appear, and select any one options to apply styles in the table. At the last in this chapter, last feature is mail merge. Mail merge is an important feature of Word applications. This feature is used to quickly create multiple copies of letters, emails, and other such documents that differ from one another in manner way. मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से एक ही मैसेज को, एक ही लेटर को मल्टीपल रिसीवर्स को सेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेल मर्ज फीचर विल प्रूव very useful for generating multiple invitations later where the name and address of the recipient vary but the content of the letter remain the same. मेल मर्ज फीचर की मदद से हम सेम कंटेंट को, सेम इंफॉर्मेशंस को मल्टीपल रेसिपिएंट्स को सेंड कर सकते हैं। There are some stages that we create to add mail merge. Stage 1, create the data source. This is the important and first stage of mail merge. And stage 2,
create the main document like this. And stage 3, merge mail merge options. These 3 stages we have to follow to create mail merge, to perform mail merge in the document. First one stage contain all informations related to recipient like name, address and phone numbers, email address. And main document contain the common text or informations inside a placeholder that will receive informations from the data source during the merging process. And mail merge is the last stage. Mail merge the data source and the main document together to create mail merge, to create a letter in the mail merge. We follow some steps to create mail merge. Step 1, click on the mailing tab. Step 2, click on the start mail merge options. In the start mail merge group, a drop down list appear. As you can see, step 1, click on mailing tab. Step 2, click on start mail merge options. A list will be open up. And step 3, finally click on step by step mail merge wizard. We follow some rest steps to apply mail merge like this: step 3, step 4, step 5, step 6. These all steps are completely based on practically or based on internet connection. We will discuss these steps in the lab class like this: step 10, step 11, step 12. All these steps are completely based on computer. We will discuss it in the lab class. Step 19, step 23. Finally, step 23 is the last steps to finalize the mail merge process. Thanks for joining these sessions. Bye bye.